going to discuss a little information about plasmid transformation technology. So generally, we are like a bit familiar with all the genetic transformation and genetic transformation studies. When we start with the transformation, so like incorporation of any foreign gene from resource to target cell, either target plant, either target organism. So incorporation of one gene, desired gene into the target organism, we call it as transformation. So this transformation having a different methodology for this. So one is direct transformation method and second one is indirect transformation. First, when we go to indirect transformation, we always do indirect transformation with agrobacterial transformation, especially in plants. So in that case, what we do is we select one gene of interest with the help of the plasmid, which we call binary vector, and that will be transferred into the agrobacteria. And agrobacteria will be agrobacteria facilitates the transformation with the infection, right? So agrobacteria is a tumefaciens. Agrobacterial tumefaciens generally causes congenital diseases, but here we disarm the genome of that. I'm not going in detail about that, the disarming and other things. So simply, and just I have to confirm like direct and indirect gene transformation. So here we call it as agrobacterium as vector. So any gene transformation which is mediated with vector, that we call indirect transformation. But whereas in direct gene transformation is simply transfer the gene into the host. That's it. We'll take the gene and we'll coat on gold particles, either tungsten filament, and do bombardment, which can reach the target nuclear part, nucleus. So this direct gene transformation also having several methods like gene gun, microporation, electroporation, and lipid transformation, microinjection, and so on. So here, why I'm telling this one, because in plaster transformation, mostly we are going to focus it on direct transformation only, because with the agrobacterial transformation, we may only reach to nucleus part, not to the chloroplast part. So here, what is it? So here, generally what happens? So this is agrobacterial tumefaciens. So we use TI plasmids, that is tumor-inducing plasmid, which will be transferred into the agrobacteria. The TI plasmid also we call it as binary vector, and that facilitates to infect our plant cell. And see, the tDNA facilitates to transfer the TI plasmid DNA into the nuclear genome, right? So that's why we call here we are not transferring our gene directly to the plant cell. Only we are transferring our gene into the agrobacteria that will facilitate incorporation of transferring desired gene into the nucleus of plant cell. So we are facilitating with agrobacteria. So that's why we call it as indirect gene transformation. So this is the gene gun. Generally we call it as biolisting method gene transformation, but famously known as gene gun. So here we use gold particles as a microcarrier, because even microcarriers, DNA doesn't travel in the air. It needs some velocity, and that velocity will be provided by the gold particles. So with the help of calcium chloride, so we'll coat DNA on gold particles, right? And with the help of helium gas, so we'll release some pressure, and that will those gold particles will release and incorporates into the cell. So here the chamber, this is the chamber. Here we place our explant on the media, and we do bombardment here. Here the general procedures like a microcarrier will be placed over here with the help of microcarrier adapters. So here, so when we talk about the nuclear and plasmid transformation, so there are two parts. When we talk about the nuclear transformation, that is indirect, either direct gene transformation, only that will be facilitated to ligate into the nucleus. But here, see, when we go to a plant cell, it having different nucleic acid compartments. One
always called a nucleus, and second one is chloroplast and mitochondria. As we knew, mitochondria and chloroplast are called as prokaryotic cell in eukaryotes. That means chloroplast and mitochondria having its own machinery apart from the nucleus. If we do transfer with normal vectors, plasmid, whatever we knew, so that always direct to incorporate into nucleus, not in other parts. To reach out the chloroplast DNA, either mitochondrial DNA, we need a proper machinery which can deliver the foreign DNA into the nucleus, so into the mitochondrial DNA. But generally, we don't do transformation in mitochondria because it's a powerhouse of cell. If any modification occurs in mitochondrial DNA, so that can destruct the complete plant cell. So in the case, what we do is we only focus on transformation of foreign gene into the chloroplast itself. So here, if it is, we use binary vectors, either any plastid vectors, any plasmid vectors, phasmids. So they all facilitates to incorporate it into the nucleus. If you use special machinery which can deliver the nucleic gene of interest into the chloroplast itself. So these are the components. And another feasibility is like plastids having interchangeable property. So generally, chloroplast, we knew what is the function of chloroplast. It involves in photosynthesis and other. So the chloroplast can transfer into the chromoplast, geranoplast, ethioplast, amyloplast. At any stage of the plant cell development, any of the chloroplast, either multiple plastids will be present. So that means if we do transfer any gene into any of the plastid, so that may change, that may transfer into the different plastids, so which may present in throughout the cellular development. So this is the one of the feasibility that can make us to target the chloroplast. So here, so silent features of the genome, plastid genome. So what are the possible features of the plastid apart from the nucleus? Because generally, if it is nucleus, it is a like chromosome network, chromatin network. It's a clumsy. But when we see into the plastids, it has double-stranded DNA molecule, and it codes for only 100 proteins, and each cell contains maximum of 10,000 copies of the plastid. But whereas its nucleus, it's only one copy we have in a cell. One copy in a cell. So apart from that, plastid genome having its own transcriptional mechanism with the help of plastid encoded polymerase and nuclear encoded polymerase. Because this plastid encoded polymerase will produce in plastid itself, but whereas nuclear encoded polymerase produces in nucleus but expresses it in plastids. And apart from that, it having its own machinery, translational machinery that can express its own gene right into the protein form. And the genes are transcribed in a upper one models. That means one gene, multiple genes will be expressed with one promoter intermediate. And these genomes are maternally inherited. So these are the advantages over the features of the plastid genome over to the nuclear genome. And here we required few things to achieve the plastid transformation, right? First, we need a proper foreign DNA delivery method. Sorry? माइक ऑफ करिए आप. Is there any questions? I can answer. No, sir. Continue, sir. Yeah. So to reach out the plastid transformation, we require proper foreign DNA material, which can pass all the barriers like cell wall, plasma membrane, and double membrane plastid. So double membrane of the plastid. So these barriers need to be crossed to reach out the plastid genome. So apart from that, plastid transformation also required a specific marker gene, that is selectable marker. In any like nuclear transformation, generally will take
kanamycin resistant, either hygromycin resistant gene. The same like plastic transformation also required a special selectable marker, but most often we use AADA, that is actinomycin resistance. So apart from that, it need to be apart from that, like, it need to integrate into the only plastid genome. But like when we do some transformation, generally it targets to the nucleus. But if it requires a special type of vehicle which can target plastid genome itself instead of nuclear genome. So we required a special chromosome networks and kind of thing. And apart from that, high regeneration ability of the tissue culture also required. So this is the structure of the plastid genome. Any plastid, if you take it peripherally, it looks like C, right? So this is the plastid genome, which having 3 compartmental segments. One is large single copy, and second one is small single copy. So this large single copy and small single copy will be separated with the help of inverted repeat regions of A and B. Whatever the plastid genome, if you take any plant, so this looks like the basic structure will be like this only: large single copy, small single copy, and into inverted regions. So in this case, whatever the gene which will be copied in one inverted repeat, automatically that will be copied into another inverted repeat as well. So this is generally when we see like in meiosis, we'll see double crossing over. So crossing over kind of structures. So based on that principle, see if we clone any of the plastid genes, plastid genome segment, generally we call it as flanking regions. So if we take the flanking regions from the plants itself, the native plants, and that will be cloned into the vector, whether it might be plasmid, idophasmid, the cosmid. So we ligate those flanking regions. They are like flanking region left and flanking region right. So apart from that, we need some selectable marker gene and one gene of interest. So based on this, if we take the foreign gene, if we take the homologous sequence of the plant plastids, so when we transfer those those vectors into the into the plant, so being they are homologous to each other, so that facilitates double crossing over. When it double crossing over occurs, the genes will be integrated. The genes which are present in the vector will be integrated into the plant with the help of double crossing over. So that's the reason it won't incorporate into the plant, because we are cloning the flanking regions of the plastids only. So these are the few locations. So like here, there are multiple genes over here. So we will be cloning only these regions, like left flanking, tRNI and tRNA. tRNA will be the right flanking and tRNI will be the left flanking. Like just consider this one is tRNI and this is tRNA. So the same regions will be cloned from plant region, that's a plant plastid, and that will be incorporated in plastid itself. So these are the regions of the flankings, and there are some selectable markers. Mostly we often use AD only, right? So this is how we achieve the plastid transformation. So simply we'll clone the vector which we designed onto the gold particles for the bombardment, and we do transformation. We'll do bombardment and go for the selection, because the selectable marker ADA resist on a spectinomycin. So whatever the transformation occurs, if they are properly integrated into the plant plastid, so that will be regenerated on selection media. Selection media is nothing but the regeneration media which having selectable antibiotic. Being a ADA resistant to the spectinomycin, so we add spectinomycin on regeneration media. So that we call selectable media. So on that we do selection. So this is another form which can express
which can explain how the integration will occur. See, this is the DNA, and this is the plant, which are having multiple plastid genomes. These are the plastids, and each plastid is having a multiple plastid genome copies because it's having like a plasmid kind of structures only. So it's having multiple copies in a single plastid itself. So when we do transformation with the foreign DNA, so that will be incorporated here, the plastome region, and they are integrated and further selection. We keep on doing selection. So here we could see like few are transformed plastome regions and few are non-transformed. This state it called as heteroplasmic state. When all cells will be transformed, I mean that means all plastid genomes will be transformed. So we call it as homoplasmic. So I'll tell you these are the multiple advantages over the nuclear transformation. If you want to express any foreign gene into the nucleus, so only one gene can be expressed. But in plastid, we do multiple gene insertion at a time. And nowadays, governments are not allowing any this genetic crops because they can disrupt the biohabitat, natural habitat of the plants. Because any like transgenic plants having resistant marker, so once they transform into the environment, and those genes will be escaped with pollen, and that can contaminate the genes which are non-transformed, but they will be transformed into the next generation with the help of pollen. So that we called transgene contamination. But being the chloroplast is a maternally inherited one, so we don't see any such transgene contamination. So we call it as one of the greatest advantages over here. And there is no position effect because we are taking only the parts which are from plastid region. So it has to be undergo for crossing over itself with the same regions. And there is no gene silencing because in prokaryotes also we cannot see gene silencing, being it's a polycystonic expression. See, generally this. In our any plant cell, 10 to 100 chloroplast cells will be present. In each chloroplast, 10 to 100 chloroplast genomes are present. So at a maximum stage, what we can expect, so maximum 100 chloroplasts, and each chloroplast having maximum of 100 chloroplast genome. So at maximum level, we can expect 10,000 copies of plastid genomes. That means if we do transform into the plastid, a single cell can produce 10,000 copies of a gene. But whereas in nucleus, only one copy will be produced. So that's a huge, like this, what we call is high level gene expression. And apart from that polycystonic expression, I already said like a single promoter can drive multiple genes because it plastid, we call it as prokaryotic genome in eukaryote. So being a prokaryote, in prokaryote system, only polycystonic expression will be there. The same manner, even plastid also expresses multiple genes that we call as a polycystonic expression. And when we can transfer multiple genes at a time, I think it will be expressed with the same promoter and terminator. So these are our few research findings. Firstly, what we did some bombardment studies, genetic transformation studies with the gene gun by expressing Gus genes. Here you could see multiple like blue coloration because Gus gene transformation with the help of Xcloak we did something. And these are the vectors which we designed in our lab, right? Especially for capsicum transformation, that is chili pepper, multiple. This is for inverted region, and this is for large single copy region here. This is large single copy, and this is small single copy. As I said, 10,000 copies are maximum what we can expect in a single cell. But when we do transformation in inverted repeats, whatever we transfer in one inverted repeat region, that will be transferred into the another inverted repeater also. So that means if we do 10,000, if
it expresses 10,000 copies in an inverted region. That automatically expresses in another. That means 20,000 copies we can express with this. So huge impact when compared to that. And if being it's like a edible one, if we transfer some important genes into the like beta carotenoid genes, like which are a precursor for this vitamin A, if we transfer it into this, and being like lettuce, generally if you transfer into the lettuce, so that way that can be edible, and the same time that will be useful for these purposes, and with a huge expression. And here, this is one of the plastic transformation experiment what we did. So here you could see some selection over here, and that will be propagated. Like multiple selection we can't see. So this is the clear indication where you can see like this. When selection which are non-transformed, they will die. Only the transformed tissue will be regenerated, and that will be selected and grown, and they will be cultivated, and we can use it for further studies. So as I said, like this is maternal inheritance being plastic is maternal inheritance. If you take the female plant, so male plant, and transformed with the same plant, so it cannot be get anything on selection media. But if you say self-pollinated one, which is already transformed, it having maternally inherited mitochondria for plastic DNA, so it will be in green color. And if female parent is transformed and male parent is like just have providing like pollens, and they will also be the same thing. They will turn into this. By that we do selection here. Male plant, right? If male plant is self-pollinated, either if you take the male plant is like transformed into the with other male plant pollens, right? Being plastid or maternally inherited, so nothing will be transferred with the pollen. So these like the seedlings were grown into the pale yellow color. So that indicates there is no transgene is transformed through pollen. Whereas if you see self-pollinated one and female pollinated one, so they having mitochondrial plastid DNA itself in it, so they are going easily. So by this we can confirm that there is no transgene contamination. So these are the few plant species, plant systems which are plastic transformation. Plastic transformation is already established. So based on that, we do some more transformations with the help of plastids, and we can improve the crop yield, agronomical important genes, and other things as well. So here you could see, yeah. Here you could see insulin gene is expressed in tobacco with the help of plastic transformation. In that you could see like 14.3% of total soluble proteins. So each in a single cell we having 14.3% of total soluble proteins of insulin. That means huge gene expression. The same manner, malarial vaccine kind of thing, and HIV preventive things, and human cytokinin, a recent even dengue. These are the genes, proteins, which are responsible for the prevention of those things. And they are expressed in the plastids of plants. Here you could see tuberculosis. If you're having these carried directly, so we may prevent the tuberculosis, TB, like kind of thing. And apart from that, even we can add some agronomical we can express agronomically important genes also, like viral resistance gene, fungal resistance gene, with the help of plastic, and that will be huge, and it is very easy to express it. So with this small information, I could conclude my part. If I'm happy to take any questions if anyone has. थैंक यू सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने हर चीज़ों को बारीकी से समझाया, और जितने भी लोग जुड़े हैं और इस वेबिनार में मैं चाहूँगा कि जिनको भी जहाँ भी
क्वेश्चंस हो, जिनके पास कोई क्वेरी हो, वो आप अभी सर हैं लाइव, आप तक पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं हिंदी में आंसर बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ सर कंफर्टेबल है, सर कह रहे हैं कि हम हिंदी में कोई भी नहीं, कोई आंसर नहीं, मैं देंगे, हिंदी कोई में बात दिक्कत कर सकता नहीं। हूँ। कोई क्वेश्चन है, पूछ लीजिएगा। एक मिनट, अभी किसी ने मैसेज किया था, प्लीज। अच्छा ठीक है, यस सर। मैसेजेस में भी कोई क्वेश्चन नहीं है फिलहाल। Even though if they want to ask directly, no problem. मैम म्यूट कर दीजिए किसी को चालू। Yes. Any questions, please? There कुछ questions है? Should I conclude? ओके सर, फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है, और चलिए इस Okay, आपका sir. बहुत बहुत आभार, Thank you बहुत so बहुत much, and धन्यवाद, thank you आपने for बहुत अच्छी Rashmi तरीके से। madam also. और ये पीपीटी हम लोग को भी मिल जाएगा, तो और भी हम लोग इसको इत्मीनान से समझेंगे। खैर फिलहाल आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस प्रोग्राम को, इस कार्यशाला को हम आगे बढ़ाते हैं, और अभी तमाम इस आयोजन से जुड़े हुए लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, चाहे इस कार्यक्रम की जो संयोजिका हैं, संरक्षिका हैं, और रश्मि मैडम हैं, और सोनू मैडम हैं, राहुल सर हैं, तमाम सब लोग लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं, और आइए चलते हैं हम लोग इस आज के इस सत्र के जो हमारे दूसरे वक्ता हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। और सॉरी मैम, दूसरे वक्ता है, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। आज की दूसरी वक्ता है डॉक्टर मोनिका अस्थाना। उनके परिचय एवं उनके आमंत्रण के लिए मैं डॉक्टर सोनू राही मैम को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि मैम का परिचय दें, उनका स्वागत करें। डॉक्टर सोनू राही मैम। A very good morning to the honorable resource persons and all our participants. It's my pleasure to introduce and welcome Dr. Monica Asthana. She is presently working as Assistant Professor, Department of Biotechnology, School of Life Sciences, Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. Dr. Monica Asthana have many achievements. One patent has been granted under Dr. Monica Asthana. The invention title is System and Method for Identification or Prediction of Breast Tumor at Early Stage. In 2017, she achieved Recognition Award for research paper presented at International Conference on Biotechnology Resource Management for Sustainable Nature in 21st Century, organized by Indian Society of Genetics and Biotechnology Research and Development at Agra. In 2018, Dr. Monica Asthana achieved Best Oral Presentation Award
for research paper presented at International Conference on Science, Technology and Social Humanities. Now, instead of taking too much of time in welcoming her, I would like to request Dr. Monica Asthana to come forward and share her tremendous work with us. Please welcome Dr. Asthana. होस्ट बनाना पड़ेगा ना मैडम को. कहाँ है? मनोज को बुलाओ. मैडम जुड़ी कहाँ है? कहाँ है मैडम? मैडम अस्थाना का दिख रहा है? मनोज का उनकी आवाज ही नहीं आ रही. नहीं ज्वाइन की. अच्छा ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन हो गया है दरअसल. सॉरी सॉरी सर. क्या हो? बोलो कि कुछ डिफिकल्टी है. ये मनोज कहाँ गया? टेक्निकल डिफिकल्टी में तो. हाँ, ये दिख ही नहीं रही है. और को होस्ट बनाने के लिए बोलो थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टी. सुनो, रिकॉर्डिंग पॉज करो और अस्थाना मैडम को को होस्ट बनाओ. नॉर्मल बट रहा है. बहुत लॉग है जो
बस कुछ ही देर में मैम जुड़ेंगी और अभी तकनीकी कारणों से वो थोड़ा सा अभी जुड़ रही है, इसलिए आप सब लोग इंतजार करें।
हम सबके बीच डॉक्टर मोनिका सक्सेना मैम जुड़ चुकी हैं। हाँ नहीं, उनके प्रोफाइल में सक्सेना लिखा था ऊपर, तो इसलिए मैंने बोला। ठीक है, अस्थाना मैम जुड़ चुकी हैं और आप लोग फिर से एक्टिव हो जाइए। और मैं मैम के स्वागत के लिए डॉक्टर, अच्छा मैम का वेलकम हो चुका है, आप सबने सुना। मैम थोड़ा सा टेक्निकल कारणों से देर में आई, फिर भी मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं मैम से चाहूंगा कि वो अपना रिव्यू रखें, अपना प्रेजेंटेशन। स्लाइड स्लाइड शेयर का मुझे वो दे दीजिए। हाँ मैंने कर दिया, होस्ट कर दिया मैम, मैं आपको पोस्ट कर दिया है। यस मैम। सर 2 मिनट दीजिएगा प्लीज, है ना, मुझे थोड़ा सा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यस मैम, आपकी प्रॉपर स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। स्क्रीन शेयरिंग तो हो रही है सर, लेकिन मुझे अपनी पीपीटीज को शेयर करना है ना। आई वांट टू। हाँ हाँ, यस, ये फाइल आपकी मिल गई। पीपीटी, जस्ट वेट सर। मतलब प्लेट भी तो लानी है। अभी रुक जाओ, इतना पता सर ओपन हो रही है सर, जरा अभी प्लीज जस्ट वेट, है ना। यस मैम, यस मैम। हाँ सर दिख रही है। हाँ मैम, दिख रही है। ओके, तो my topic is tissue culture, a source for the conservation of, एक मिनट सर, यहाँ इसको बंद करने कैसे करेंगे, यहाँ से। A perpetual source for the conservation of medicinally important endangered plant species. First one is general introduction. Medicinal plants are globally valuable sources of new drugs. In the United States, मेरी आवाज आ रही है सर? Am I audible? यस मैम, यस मैम। Okay, okay. In United States, about 118 of the top 150 prescription drugs are based on natural sources. Furthermore, up to 80% of people in developing countries are totally dependent on herbal drugs for their primary healthcare, and over 25% of prescribed medicines in developed countries are derived from wild plant species. India is floristically rich in, as is recognized as one of the 12 mega biodiversity centers of the world, ranking 10th among the plant resources rich nations of the world and 4th among the countries of Asia. So, threats क्या है medicinal plants के लिए? Basically, there are various factors that produce or pose threat to many medicinal plants. First one is degradation of habitat due to expanding human activities, forest decline, destructive collection of plant species, invasion of exotic species that compete with native species, increased spread of diseases, industrialization, overexploitation, human socioeconomic change and upheaval, changes in environment, agriculture practices,
excessive use of agrochemicals, natural and man-made calamities, genetic erosion, etc. Basically, these are the major threats for medicinal plants. Various type of red books published in which these plants are added, what type, which medicinal plants are basically on threat. In India, various type of medicinal plants are used, basically tulsi, spearmint, caman, gloe, curry leaves, khas leaves, ashwagandha, aloe. These are the various medicinal plants used in India, but various extinct medicinal plants, endangered medicinal plants are also there. जिसकी वजह से क्या उनके इस टाइम थ्रेट है बहुत ज्यादा, तो ये जरूरी हो रहा है कि उनको किस तरीके से बचाया जाए. गिंको बायलोबा है, वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स आर देयर. एक्चुअली वैसे तो सारे के सारे जो मेडिसिनल प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स हैं, दे हैव ऑल हैव द मेडिसिनल वैल्यूज. तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंस ये होती है कि हाउ वी कंजर्व आवर मेडिसिनल प्लांट्स. तो मेडिसिनल प्लांट्स को कंजर्व करना, दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग प्रोसेस, क्योंकि taxa occur in a wide range of habitats and geographic regions. Their conservation threats and ultimate use are diverse, and users are not only locally rural communities but also far away rural citizens. However, it is widely agreed that the conservation of medicinal plants can be achieved through an integrated approach, जिसमें main है in situ and ex situ conservation strategies. So, what is in situ conservation and what is ex situ conservation? Basically, medicinal plant conservation areas, biosphere reserves, national parks, sacred groves, cultivation in forests, joint forest management, legislations and various type of जहाँ पे हम ban कर सकते हैं exports को, converting forest for agricultural commercial purposes such as mining. और ex situ conservation में आते हैं हमारे herbal gardens, theme parks, social urban forestry, avenue plantation, cultivation of specific species, gene banks, seed pollen DNA, tissue culture repositories, and cryopreservation. These are the ex situ conservation methods. So what are the cultivation of medicinal plants, how we cultivate them? So best way to produce the plant material needed for medicine is to cultivate the plants. This is far better than collecting the plant material from the wild, since it does not deplete wild stocks. And in many cases, the declination habitats of native plants can no longer supply the expanding market for medicinal plant products. In the case of rare, endangered, or overexploited plants, cultivation is the only way to produce material without further endangering the survival of these species. So cultivation also has pharmacological advantage over wild collecting. Wild collected plants normally vary in quality and composition due to environmental and genetic differences. In cultivation, this variation and the resulting uncertainty of the therapeutic benefit is much reduced. That's why the need to develop the tradition of cultivating the plant is imperative. For sustainable cultivation of medicinal plant, at least the following points should be considered and has to implement it properly. First, the Ministry of Agriculture, Forestry and Health should coordinate a program to establish nurseries where the medicinal plants are cultivated. Second, botanical gardens and horticulture agriculture institutes should improve the agronomy of cultivated medicinal plants and bring into cultivation those species needed in medicine that have not been cultivated before. Oh, sorry. Plant breeders should breed more uniform, higher yielding forms of medicinal plants. Then cultivation practices should minimize the use of chemicals. Botanical gardens and horticulture institutes should provide effective horticulture training and information. So these are the various advantages and disadvantages of the ex situ conservation methods. Basically, these are the ex situ conservation methods in seed banks, pollen banks, tissue culture banks, DNA banks, or gene banks, cryopreservation of ovum and sperm of embryo. These are the various advantages and disadvantages. तो ex situ technology, conservation technology में जो important methods हैं,
One is embryo micropropagation, somatic embryogenesis, clonal propagation of shoot tips, artificial. Basically, all these methods are dependent on the tissue culture. The preservation of plants or seeds in gene banks or in vitro cell lines or clone in tissue collections under appropriate conditions or long-term storage often seems to be easiest and most preferred mode. The gene banks collection and in fact many breeder collections are too large to scientists to intensively investigate and record all traits in the screening process. So some of the gene banks are here. Then my topic is how we sustain our medicinal plants through tissue culture. So basically, now come to the tissue culture. What is tissue culture? Basically, tissue culture is the in vitro aseptic culture of cell tissues or whole plant under controlled nutritional and environmental conditions, often to produce the clones of plants. Tissue culture is also known as micropropagation or in vitro culture. The growing of plant cells, tissues, organs, seeds, or other plant parts in a sterile environment on the nutrient medium. What are the fundamental principles of plant tissue culture? Basically, all you know that the plants have the capacity of totipotency. But what is totipotency? The ability of the cell to regenerate into a whole plant. यानी प्लांट के सेल में इस तरीके की एबिलिटी होती है कि वो पूरे के पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है. तो इसीलिए अगर हम प्लांट का कोई भी पार्ट यूज करते हैं एज ए प्लांट तो हम उससे पूरे प्लांट का फॉर्मेशन करवा सकते हैं. Plasticity, it is the ability of plant to alter their metabolism, growth and development that best suit their environment. What are the techniques of plant tissue culture? So for various type of techniques are available there. Basically, these are the steps to how to produce plantlets. So first one, we have to prepare a suitable nutrient media. Moreover, जो preferred the media, that is MS media. Selection of explant कि हम किस टाइप का explant ले रहे हैं कि हम leaf tip ले रहे हैं, root ले रहे हैं या कोई organ ले रहे हैं, anther ले रहे हैं. That depend. These are the explants. Then उसके बाद आता है sterilization of explant. Then inoculation of explant, incubation, transfer of callus and regeneration. Basically यहाँ पर हम hormones का ratio देखते हैं. Basically two types of hormones are used there, cytokinin and auxin. Then hardening of or acclimatization, transfer of plantlets to the field. This is the technique जहाँ से हम start करते हैं. तो फर्स्ट वन सबसे पहले हम स्ट्राइल्स कंडीशंस में इनोकुलेट करते हैं अपने एक्स प्लांट को इन द कल्चर मीडिया. तो इसके लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं, हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम जिस भी पार्ट को हम लेना चाहते हैं तो सबसे पहले प्लांट से हम वो पार्ट को निकालते हैं, उसको स्टरलाइज करते हैं, वॉश करते हैं. और वॉश करने के लिए हम HgCl2 सोल्यूशन का यूज करते हैं और कुछ एंटी फंगल पाउडर्स का भी यूज किया जाता है ताकि अगर उस पर किसी तरीके का फंगस है तो उसको भी हम हटा दें. देन 70% इथेनॉल में हम उसको साफ करते हैं. उसको निकालने के बाद फिर हम जाते हैं उसको लेकर एक्सप्लांट को लेकर हमारे लैमिनार फ्लो हुड में, जहां पर मीडिया प्रिपेयर्ड हमारा रखा होता है. और यहाँ पर हम सरफेस स्टरलाइजेशन करने के बाद फिर एक्सप्लांट की स्लाइसिंग करते हैं और फिर एसेप्टिक कंडीशंस में हम उसको फिर हम मीडिया में इनोकुलेट करवाते हैं. वहां पर हम दो तरीके से इनोकुलेशन के बाद दो तरीके से हमें ग्रोथ देखने को मिलती है. एक होता है ऑर्गेनोजेनेसिस एंड सेकंड वन इज कैलोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस मींस माइक्रोप्रोपेगेशन. तो माइक्रोप्रोपेगेशन जो अभी मैंने बताया, हम सीधे एक्सप्लांट को हमने मीडियम में डाल दिया जहां पर उसका शूट इंडक्शन और रूट इंडक्शन करवाया और फिर उसके बाद जब शूट रूट का फॉर्मेशन हो गया तब हम इसे ओपन फील्ड में लगा दें या फिर हम ग्रीन हाउस में पहले लेकर जाएं या उसका जम्प्लास कंजर्वेशन करें. ये हो गया एक मेथड जहां पे हमने एमएस मीडिया का यूज किया है. दूसरा मेथड है जहां पर हम हेयरी रूट कल्चर करते हैं. बेसिकली हेयरी रूट कल्चर हमें इमॉर्टल सेल लाइन प्रोवाइड करता है और यहाँ पर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन करवाते हैं. बेसिकली कैलोजेनेसिस जो है, यहाँ हम कैलोजेनेसिस के लिए हम बेसिकली इट इज अ सेल सस्पेंशन कल्चर जहां पर हम जो है सस्पेंशन में हम ग्रो करवाते हैं सेल्स को और यहाँ पर हम इस बायोटिक स्ट्रेस भी प्रोवाइड करते हैं, प्रिकर्सर्स और एलिसिटर्स. तो यहाँ पर हम जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकते हैं सेल्स में.
अगर हम किसी तरीके का करवाना चाहते हैं, उनमें कोई भी चेंज अगर हम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मेथड्स यूज करते हैं। या तो हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस यूज कर सकते हैं। ये जो है दिस इज अ बैक्टीरिया, इट इज, इसको हम बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। इसमें जो टीडीएनए प्रेजेंट होता है, वो टीडीएनए ट्रांसफर होता है प्लांट में, और प्लांट के जीनोम में जाकर जो है वो अपने आप को स्थापित कर लेता है। तो जो हमारा जीन है जिसको कि हम ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, वो हम इसके टीडीएनए में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सेकेंड वन इज जीनोम एडिटिंग। इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें हम प्लांट के जीनोम में डायरेक्ट एडिटिंग कर सकते हैं, और उसमें हम अपना जो जीन है, स्पेसिफिक जीन हम उसमें डाल सकते हैं, जिसके लिए वेरियस मेथड्स का हम यूज करते हैं। आजकल तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जो आजकल सबसे न्यू टेक्नोलॉजी है जिसका यूज किया जा रहा है। देन थर्ड वन इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर हम दो सेल्स को फ्यूज करवाते हैं, और फ्यूज करवाने के बाद दोनों के न्यूक्लियस उसमें आ जाता है, और फिर एक नया जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है जीनोम का। तो बेसिकली जो टिश्यू कल्चर है, दैट इज द, इसमें हम प्रोपोगेशन करवाते हैं प्लांट का, जिसमें हम प्लांट पार्ट या सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल का यूज करते हैं कंट्रोल्ड और हाइजीनिक कंडीशंस में। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स पे डिफरेंट तरीके से। ये क्विकली प्रोड्यूस करता है मैच्योर प्लांट्स को बाय प्रोड्यूसिंग मल्टीपल्स ऑफ प्लांट्स इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स। यहाँ पे सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और नेसेसरी पॉलिनेटर टू प्रोड्यूस सीड्स। इसमें हम होल प्लांट को रीजनरेट करवाते हैं प्लांट सेल से, जो कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड भी करवा सकते हैं by producing plants from seeds that otherwise have very low chances of germinating and growing etc। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें क्या है, एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाता है। अबॉर्ट हो जाने के बाद क्या है, वो फ्लोरिश नहीं हो पाता पूरी तरीके से फॉर्मेट। तो उसमें हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू करते हैं। हमें जब टाइम पे पता चल गया कि अब एम्ब्रियो अबॉर्ट होने वाला है, उससे पहले ही हम एम्ब्रियो को निकाल कर अगर हम उसका टिश्यू कल्चर करते हैं, तो हम पूरे के पूरे प्लांट को रीजनरेट करवा सकते हैं। तो जो कैलस मीडिएटेड ऑर्गेनोजेनेसिस है, जहां पर प्लांट कैलस का फॉर्मेशन करता है। बेसिकली व्हाट इज कैलस? कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स जो कि ड्राइव होता है प्लांट टिश्यू से। तो कैलस सेल्स जो है, ये सेल्स है जो कि कवर करते हैं प्लांट वुड को। तो ये इंड्यूस कैलस फॉर्मेशन प्लांट टिश्यूज में हम करवाते हैं, प्लांट टिश्यू सरफेस स्टरलाइज्ड करवाते हैं, एंड देन उनको हम प्लेट करते हैं इन विट्रो टिश्यू कल्चर मीडियम में। उसके बाद हम इसमें कंसंट्रेशन प्रोवाइड करते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की। तो दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। देन उसके बाद हम कल्चर एस्टेब्लिश करते हैं, चाहे वो हम उसके लिए एक्सप्लांट हम सीड ले रहे हो, रूट ले रहे हो, लीफ ले रहे हो, फ्लावर ले रहे हो, इंटरनॉट ले रहे हो, या एपिकल लेटरल मेरिस्टेम ले रहे हैं, बड ले रहे हैं। तो कोई भी हम क्या ले सकते हैं, कॉटिलेडन ले सकते हैं, मेरिस्टेम ले सकते हैं। दीज आर द वेरियस एक्स प्लांट्स जो कि हम टिश्यू कल्चर के लिए यूज करते हैं। और फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है ऑर्गेनोजेनेसिस करवा सकते हैं। करवा के फिर हम इंडक्शन करवाते हैं, प्रोलिफरेशन करवाते हैं सेल्स का, फिर उसके बाद इन विट्रो रूटिंग करवाई जाती है, शूटिंग होती है, फिर हार्डनिंग होती है। उसके बाद हम एक्लिमेटाइजेशन करवाते हैं, देन वो कन्वर्ट होता है मैच्योर प्लांट में, जिसको की बाद में हम ग्रीन हाउस में हम शिफ्ट करवाते हैं, पॉटेड करवाते हैं। जब ग्रीन हाउस में कंडीशन स्टेबल वो हो जाती है उसके तन, उसको हम ओपन फील्ड में ग्रो करवा सकते हैं। These are the in vitro environmental variations due to explant and culture media में कई बार variations देखने को मिलती हैं। हार्मोन्स, हम various type of हार्मोन्स में बता चुके यूज करते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन और इथाइलिन। और स्ट्रेसेस भी हैं, तो जो कि बहुत सारे केमिकल फैक्टर्स हैं जो डिस्टर्ब करते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स को। तो वो हम कैसे करवाते हैं, वो करवाने के बाद उसमें हम क्या है, मॉलिक्यूलर चेंजेस भी करवा सकते हैं। जीन एक्सप्रेशन होता है, जेनेटिक चेंजेस जो है वो अपीयर होने लगते हैं, सोमैटिक वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, और हमें एक ऑल्टर्ड और नया जो है प्लांट का फेट जो है वो देखने को मिलता है। तो जो कंजर्वेशन है मेडिसिनल प्लांट्स का थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, हम बायोटेक्नोलॉजी क्योंकि इमर्जिंग दैट पावरफुल वेपन है इस टाइम, तो उसको हम यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी में जिसमें कि हम कंजर्वेशन करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स का, जिसमें हमारा सबसे पहला है टिश्यू कल्चर। देन नेक्स्ट वन इज इन विट्रो रीजेनरेशन, देन कैलस मीडिएटेड ऑर्गेनोजेनेसिस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, रीजेनरेशन थ्रू सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस,
सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है कि हम सोमैटिक सेल से हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवाते हैं और उससे होल प्लांट का फॉर्मेशन करवाते हैं, या हम कंजर्वेशन कर सकते हैं थ्रू क्रायो कंजर्वेशन। तो व्हाट इज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? तो इसलिए हम कहते हैं कि जो यूज है बायोटेक्नोलॉजी टूल्स का कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस में, वो बहुत ही एसेंशियल है आजकल। Therefore, there are some adverse effects of biotechnology on diversity, especially with respect to non-target effects of genetically modified organism in natural ecosystem. तो ये रेज करता है क्वेश्चन भी, बायोसेफ्टी इश्यूज भी इसमें। तो इसकी वजह से आता है। तो सबसे पहला आप लोग जानते हैं, सबसे पहला जो बनाया गया था दैट इज बीटी कॉटन। बीटी स्टैंड्स फॉर बीटी बैसिलस थ्रूजेनेसिस। तो उसको वो सबसे पहला इंसेक्टिसाइड प्लांट बनाया गया था, जिसमें क्या था कि इसमें इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा था। तो उसके लिए क्या किया गया था, बैसिलस थ्रूजेनेसिस का जो जीन था दैट इज ट्रांसफर्ड इनटू द प्लांट्स। तो क्या किया गया, बैक्टीरिया से उस जीन को आइसोलेट किया गया, उस जीन की क्लोनिंग की गई। क्लोनिंग करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म किया गया सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, और जिससे कि जो प्लांट बना दैट इज जो था दैट हैव द रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट। और ये रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा था, बेसिकली बीटी क्या करता है, ये एक प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है। और जब इंसेक्ट की गट में जाता है तो ये प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट होता है टॉक्सिन में, और गट में जाते जब ये टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है तो ये फिर क्या करता है, इंसेक्ट को खत्म कर देता है। ह्यूमंस के केस में क्या होता है, जब इसे खाते हैं तो उनको वो पीएच और वो टेम्परेचर नहीं मिलता जिससे कि प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो सके टॉक्सिन में, इसलिए ये ह्यूमंस के लिए लेस ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक होता है। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कैसे करवाते हैं प्लांट में? तो एक तो इनडायरेक्ट मेथड है जो कि थ्रू वेक्टर्स है, जिसमें हमने वेक्टर लिया है बैक्टीरियम, इसमें हम डीएनए को ट्रांसफर करवाते हैं प्लांट से प्लांट में। डायरेक्ट मेथड्स में इंपॉर्टेंट मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन, जहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड किया जाता है, और जिससे क्या जैसे कि इंक्रीज होती है मेम्ब्रेन और सेल वॉल की परमेबिलिटी, जिससे कि डीएनए अंदर आता है और फिर न्यूक्लियस में जाकर जो है जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। माइक्रो इंजेक्शन में भी हम इंजेक्शन के थ्रू, इसमें हम इंजेक्ट, एक अल्ट्राफाइन निडल होती है, उसके थ्रू हम इंजेक्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को डायरेक्टली। इसके अलावा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है, जहां पर हम बेसिकली ये जो मेथड है सोमैटिक हाइब्रिडेशन में यूज किया जाता है, जहां हम दो प्रोटोप्लास्ट को एक साथ फ्यूज करते हैं। तो बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडेशन। तो इस तरीके से हम कल्चर करते हैं, मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से हम किस लिए हम इनको यूज कर रहे हैं। तो बहुत तरीकों से हम इनका यूज करते हैं। हम आजकल बायोडीजल बनाने के लिए भी प्लांट्स का यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज भी कर रहे हैं, फाइबर्स के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों के लिए हम आजकल यूज कर रहे हैं इसको। तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज को नाम दिया गया है, जो कि क्लीन अप करता है टॉक्सिक मेटल्स को, मेटलॉइड्स को, रेडियो न्यूक्लाइड्स को एनवायरनमेंट में। तो जो भी सॉइल में प्रेजेंट है ये मेटल्स, इन मेटल्स को क्या है, ये डिग्रेड करने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्लांट्स। इसके अलावा दिस इज बीटी कॉटन जो बनाई गई है, बीटी कॉटन। फिर आता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर जो है हम यूज करते हैं कंजर्व करने के लिए रेयर स्पीशीज को, जो कि फॉरेस्ट में अवेलेबल है। प्लांट ब्रीडर्स जो है वो भी यूज कर सकते हैं टिश्यू कल्चर को टू स्क्रीन रादर सेल्स रादर देन प्लांट्स। Large scale growth of plant cells in liquid culture as a source of secondary products like recombinant proteins used as biopharmaceuticals. So these are the various advantages of the tissue culture, and these are the various medicinal important plants that are endangered, जो कि इस टाइम endangered में है। और ये कौन कौन से secondary metabolites को produce करते हैं? These are the secondary metabolites जो कि टिश्यू कल्चर में प्रोड्यूस होते हैं, और इनको फिर हम फार्मास्यूटिकल्स में यूज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
दीज आर द प्लांट्स जिनसे कि हम एक्टिव मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन करवाते हैं और जिनको हम थेरेपी के लिए यूज करते हैं. मेडिसिनल वैल्यूज हैं तो कैथरंथस रोजेस है तो दैट इज यूज्ड फॉर द कैंसर थेरेपी. ऐसे गिंको बायलोबा जो कि इंडेंजर्ड है आजकल, अब तो खैर काफी मात्रा में ये उगा लिया गया है विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर एंड अदर बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स. इस टाइम पर काफी मात्रा में अवेलेबल है. एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी डायबिटिक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और कैंसर थेरेपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. These are the various list that is available जो कि different type of medicinal purposes के लिए हम use करते हैं. ये डायोस्कोरिया स्पीशीज है जो कि एंटी ट्यूमर है और इनको हम वेरियस इंसेक्ट बाइट और स्नेक्स बाइट्स में भी यूज करते हैं. तो इसीलिए इन प्लांट्स को कंजर्व करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और इनको जो है कंजर्व करने का एक मेथड है टिश्यू कल्चर. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. और हम चाहेंगे कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और जो भी मेंबर्स हैं वो अगर मैम से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. अभी इस लाइव सेशन में रश्मि पाठक जी जुड़ी हैं, सविता डावर मैम जुड़ी हैं और आकांक्षा द्विवेदी जी हैं, रश्मि मैम हैं, सोनू मैम हैं और सभी लोग जुड़े हैं. ज्योतिलता मैम स्क्रीन में लगातार दिख रही हैं, विद्या झा मैम हैं, आंचल पांडे हैं और राहुल सर हैं. हालांकि राहुल सर दिख नहीं रहे हैं पर जुड़े हैं और तमाम लोग जुड़े हुए हैं. तो मैं थैंक यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी सर, बट सॉरी फॉर द डिले. एक्चुअली नो मैम, कोई इशू नहीं है. मेरे को टाइम 1:30 बजे का था तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा डिले हो गया, तो आई एम सॉरी फॉर हाँ, दैट. मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जो भी पूछना चाहें तो वो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ. मैसेजेस में मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ लोग बीच बीच में मैसेजेस भी करते हैं. नहीं, कोई मैसेजेस नहीं है. सर के लिए था हिंदी में बात करें. Actually, sir, this is a very common technique tissue culture. Everybody knows कि two types of hormones are there and but basically ये है सब जानते तो है but क्वेश्चन यूटिलाइज करना दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट. हम हर एक कहीं पर जाकर टिश्यू कल्चर लैब खोल कर ये चाहें कि हम कर लें तो दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट इज नॉट सो इजी जितना पढ़ने में हमें लगता है कि इजी है. तो उतना इजी नहीं है क्योंकि हमें सेप्टिक कंडीशंस एंड ऑल दैट बहुत मेंटेन रखनी पड़ती है. लाइट का कितना लाइट देना है, कितने में डार्क में रखना है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीजनरेशन एंड बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट मोरोवर ऑक्सीजन एंड द साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन शायद रश्मि पाठक जी ने मैसेज किया है कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स आर सेंसिटिव टू पेट्स एंड डिजीज. या स्टार्टिंग में दैट्स व्हाई हम उन्हें ग्रीन हाउस में हम रखते हैं ताकि हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके उनको एक डायरेक्ट ओपन में ना ले जाकर, तो हम पहले ग्रीन हाउस में रखते हैं ताकि वो उनका जो पूरी प्रॉपर तरीके से इम्यूनिटी डेवलप हो सके सब चीजों के लिए, और उसके बाद ही Yes, हम ma'am. उनको लेकर जाते हैं ओपन फील्ड में. हम डायरेक्टली कभी भी ओपन फील्ड में हम लेकर नहीं जाते. थैंक यू मामा. और कोई? फीडबैक सबको बता देना, फीडबैक देंगे और संभालने ये सर्टिफिकेट मिल रहा है. फीडबैक यहाँ से एक फीडबैक फॉर्म आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा और आप सब उसको कंप्लीट करके उसे रिटर्न करेंगे और जो सर्टिफिकेट है वो भी ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाएंगे. और हाँ, फीडबैक के बाद. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक और यू. आप इस सभा को समाप्त करते हैं. और तो 2 दिन का ये सत्र लगातार चलता रहा और सभी वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने अपनी अपनी बातें रखी, नई चीजें सामने आई. तो मैं इस जो वेबिनार है उसकी संरक्षिका डॉक्टर
नीता मैम, संयोजिका मैम डॉक्टर राशि पांडे और रश्मि मैम, सोनू मैम, सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को मैं कंक्लूड करता हूँ। आप सबने सहयोग दिया और टेक्निकल में हमारे मनोज भाई लगातार सक्रिय रहे, उनका भी बहुत बहुत आभार। और जितने भी लोग थे इस सेशन में हमारी समिति में, चाहे वो अनामिका जी हो, चाहे वो मीनाक्षी मैम हो, ज्योतिलता मैम हो, श्रद्धा मैम हो, सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। जल्दी बैठो।
उतार दिए अरे तू एक डाल देना नारी बहुत खतरनाक है बहुत डरना हुआ आज आएगा तो कल में देना आप ठीक है तो अरे सुन लो लेकिन गाड़ी को ना खाना गाड़ी का तो मंजूर हो जाएगी नहीं गाड़ी हो जाएगी ना तो लेके आएगा ना इसका निकल जाएगा वो भी रहेगा वो भी उसका भी हो जाएगा चलो ऊपर डाल मतलब तुम दो चार रहोगे तुम हेलो चलो लगा दूंगा तूने पानी नहाए कि नहीं नहाया पानी नहाए भगवान में सब खाना पता है मेरे एक बजे तक खड़े हो बेटा खड़े हो जा चलता है तो काली भाई अरे हार्ड गया था मेरे भाई मैं कब को बोल रहा हूँ यार हार्ड गया था मैं जा रहा हूँ यहाँ पे आ रहा है क्या यार फोन लगाना है आधे घंटे बाद ठीक है बोला भाई पैसे कम हो गए तो छोटी बातें कैसी
कहाँ पेन ड्राइव उतरोगे क्या? नहीं वो माताराम। पानी